Hi, good evening, everyone. This is Shefali Singla, and in this session, we will be talking about binary tree construction. So, I hope that आप लोगों को ट्री ट्रेवर्सल्स वाला सेशन बहुत अच्छा लगा होगा एंड यू हैव लर्न द शॉर्ट ट्रिक्स. आपको लोगों को शॉर्ट ट्रिक समझ में आई होगी. तो मैंने ट्री ट्रेवर्सल्स में 3 तरीके डिस्कस किए थे ट्री ट्रेवर्सल फाइंड करने के लिए एंड उन तरीकों को यूज कैसे करते हैं अगर क्वेश्चन आ जाता है तो किस तरीके से आप फ्रैक्शन ऑफ मिनट में अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं वो हम लोगों ने मास्टर क्लास में डिस्कस किया था. सो आई discussed various types of questions in the master class. I hope that you are now comfortable with the tree traversals. अब बेटा कई बार क्या होता है कि आपको इन ऑर्डर प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर डायरेक्टली ना पूछकर सबसे पहले आपको कुछ ट्रेवर्सल ऑर्डर दिया होता है. आपको ट्री कंस्ट्रक्ट करना है उससे एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द थर्ड ट्रेवर्सल. So this is the scenario. So in this scenario, you are supposed to construct the binary tree. कई बार ये भी होता है कि आपको कुछ एलिमेंट्स गिवन होते हैं और ये पूछा जाता है कि ये जो प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर है इसके करस्पॉन्डिंग जो ट्री होगा उसमें नंबर ऑफ लेवल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ लास्ट नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट एट द लास्ट लेवल. कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस हो सकते हैं. जब ट्री बन गया तो यू कैन हैंडल एनीथिंग. नंबर ऑफ लेवल्स, किसी भी लेवल पे नंबर ऑफ नोड्स कितनी आ रही है या फिर लेफ्ट सब ट्री में कितने एलिमेंट्स है, राइट सब ट्री में कितने एलिमेंट्स है. यू कैन इजीली हैंडल ऑल दीज क्वेश्चंस. सो लेट्स फोकस ऑन द बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्शन. सो जब हम बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ट्री के लिए रूट एलिमेंट कौन सा बनेगा. नाउ वी हैड टॉक्ड अबाउट प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर. अब हमारे पास प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर हमने फाइंड किया था. प्री मींस रूट इज द फर्स्ट एलिमेंट. सबसे पहले आपके पास रूट आएगा, रूट. देन वी हैव लेफ्ट सब ट्री एलिमेंट्स एंड देन वी हैव राइट सब ट्री एलिमेंट्स. सिमिलरली इन ऑर्डर के लिए हमने बोला था इन मींस रूट बीच में आ रहा है, सो इट इज लेफ्ट सब ट्री, रूट, and then we have right subtree elements. Then we talked about the post order. In the post order, we had said that root will be coming at the end. So here we have left subtree elements, right subtree elements, and then we have the root. Right? अब जब हमें ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, वी नो दैट द फर्स्ट एलिमेंट दैट वी आर गोइंग टू ऐड टू द ट्री, जो भी पहला एलिमेंट ट्री में ऐड होगा, दैट विल बी द रूट एलिमेंट. अब प्री ऑर्डर में जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट विल बी द रूट एलिमेंट एंड इन द पोस्ट ऑर्डर लास्ट एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट. इसका मतलब अगर आपको यूनिकली रूट आइडेंटिफाई करना है तो चाहे आप प्री ऑर्डर को फॉलो कर लीजिए, प्री ऑर्डर का पहला एलिमेंट रूट हो जाएगा और पोस्ट ऑर्डर का आखिरी एलिमेंट रूट हो जाएगा. सो इन ऑर्डर टू यूनिकली आइडेंटिफाई रूट वी विल बी टेकिंग प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर. ये हम किसके लिए ले रहे हैं, ताकि हमें रूट मिले. अब ट्री के अंदर हमारे पास सिर्फ रूट नहीं होता है. रूट आइडेंटिफाई करने के बाद हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट्स कौन से होंगे, लेफ्ट सब ट्री एलिमेंट्स एंड राइट सब ट्री एलिमेंट्स. रूट तो ठीक है भैया, फर्स्ट या लास्ट एलिमेंट रूट आ गया, बट लेफ्ट सब ट्री एलिमेंट्स और राइट सब ट्री एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिकॉज हमें नहीं पता कि कितने एलिमेंट्स लेफ्ट सब ट्री के और कितने एलिमेंट्स राइट सब ट्री के. सेम गोज विद द पोस्ट ऑर्डर. हियर वी डू नॉट नो हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर इन द लेफ्ट सब ट्री और द राइट सब ट्री. तो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के एलिमेंट्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर ने आपको रूट बता दिया, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को बीच में रखिए और उस एलिमेंट के लेफ्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं वो लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट्स है, राइट वाले राइट सब ट्री के एलिमेंट्स है. दिस मींस दैट in order to distinguish between the elements of left subtree and right subtree, in order is mandatory, क्योंकि और कोई भी sequence differentiate नहीं करेगा. So this means that अगर आपको unique binary tree construct करना है, either we need the pre-order in order or post-order in order. So both the sequences, this is OR, so both the combinations will give you unique binary tree. Unique binary tree. ये समझ में आया. सिर्फ अगर आपके पास एक ही सीक्वेंस दिया हुआ है प्री ऑर्डर तो उस केस में आपके पास यूनिक बाइनरी ट्री नहीं बन सकता. फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग द ट्री एज ए बी सी, तो प्री ऑर्डर क्या है इसका, प्री ऑर्डर इज
You know the shortcut of traversing the tree elements. So this is A, B, C. अगर मेरे पास ट्री बना हुआ है A, B, C, तो भी प्री ऑर्डर यही बनेगा. If I'm having A, B, C, then also will be getting the same प्री ऑर्डर. तो आप देख सकते हो सिर्फ प्री ऑर्डर के बेसिस पे हम यूनिकली रूट को आइडेंटिफाई कर पा रहे थे. बी और सी लेफ्ट साइड पे आएंगे. दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री और लेफ्ट एंड राइट सब ट्री. we cannot say anything even if you have the tree like a b c, तो भी हम नहीं बता सकते कि लेफ्ट साइड पे एक एलिमेंट आ रहा है, राइट साइड पे एक एलिमेंट आ रहा है. So that is why in order to uniquely identify the elements of left subtree and right subtree we need the in order. मेक सेंस. अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो फिर ट्री कंस्ट्रक्शन में कुछ भी नहीं है. तो सिर्फ प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर आपको यूनिक बाइनरी ट्री नहीं दे सकते. अब डाउट ये आएगा कि मैम बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें प्री ऑर्डर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री बोल देते हैं एंड पोस्ट ऑर्डर पूछ लेते हैं. तो बेटा वहां पे ध्यान दीजिएगा, वहां पे बाइनरी सर्च ट्री यूज होता है, बाइनरी ट्री नहीं होता है. बाइनरी सर्च ट्री में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि whenever we are talking about the in order of the binary search tree, that is always the ascending order. तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको इन ऑर्डर दिया गया है. कैसे इनडायरेक्टली दिया? जैसे बाइनरी सर्च ट्री के एलिमेंट्स दे दिया, आपको इन ऑर्डर अलग से देने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वी नो दैट इन ऑर्डर ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री इज ऑलवेज द असेंडिंग ऑर्डर. इन ऑर्डर of binary search tree is always the ascending order. Binary search tree में मैंने डिस्कस भी किया था कि ये हमेशा ascending order में क्यों आते हैं एलिमेंट्स. In order of binary search tree is always ascending order. इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत बार क्वेश्चन आया है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बाइनरी सर्च ट्री में वी नो दैट एलिमेंट्स ऑफ लेफ्ट सब ट्री आर स्मॉलर देन रूट and root is smaller than right subtree. और in order में हम यही बोलते हैं, पहले आपके पास left subtree आ रहा है, then root, then right subtree. So these are nothing but elements are arranged in the ascending order. Simple. So if this is clear, so now we'll be discussing the questions. सबसे पहले हम tree construct करेंगे from pre-order and in order. दो questions करेंगे, फिर हम tree construct करेंगे from the post order and in order. Approach same है. तरीका क्या रहेगा? सिंपल स्टेप्स है. पहला स्टेप आइडेंटिफाई रूट. स्टेप 1 is to identify root. Once the root is obtained, root identify करने के लिए we will be referring to pre-order or post-order. I'm writing on the top right. Second step, हर नोड के लिए आपको यही दो स्टेप्स फॉलो करने. आइडेंटिफाई द रूट. आफ्टर दैट differentiate left subtree elements and right subtree elements. Differentiate left subtree and right subtree elements. That's it. So now let's consider the first example. I want to construct a binary tree from the pre-order and in-order. आपको pre-order क्योंकि binary tree है तो pre-order और in-order दिया गया है. So first of all, first step is to identify the root node. रूट किसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे? प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर? तो फर्स्ट स्टेप के लिए यू नीड टू रेफर टू प्री ऑर्डर. सो प्री ऑर्डर मीन्स फर्स्ट एलिमेंट विल बी द रूट एलिमेंट. दैट मीन्स ट्री के लिए रूट बन जाएगी आपके पास ए. नाउ सेकेंड स्टेप, अब ए के लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के एलिमेंट्स कौन से होंगे? इसके लिए हम इन ऑर्डर के पास जाएंगे. किसके लेफ्ट सब ट्री एलिमेंट्स चाहिए? लेफ्ट एंड राइट सब ट्री एलिमेंट्स ऑफ ए. ए के लेफ्ट में तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं डी बी ई. दैट मीन्स दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ लेफ्ट सब ट्री. सिमिलरली ए के राइट में तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं एफ सी जी. दैट मीन्स दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ राइट सब ट्री एफ सी जी. नाउ आउट ऑफ दीज थ्री एलिमेंट्स किसी भी पॉइंट पे किसी भी नोड में आपके पास एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं होगा. सो हियर वी आर गेटिंग थ्री एलिमेंट्स. सो यू कैन से दैट इन द प्री ऑर्डर BDE, BDE, DBE किसी सीक्वेंस में आ रहे हैं. these are the elements of left subtree and these are the three elements of right subtree.
अब सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे लेफ्ट सब ट्री में. व्हाट विल बी द रूट एलिमेंट? whatever is coming first, b is coming first, so b will be the root element. B is present here. On the left of b we are getting d, that means d will be the left subtree element. Here we'll be getting d, and on the right of b we are getting the element e, so here we'll add e. Similarly, out of the elements of right subtree, that is C, F, G, C is coming first. That means for the right subtree, C will be the root. On the left of C, we are getting F. So left subtree will contain F. And on the right side of C, we are getting G. So right subtree will contain the element G. So ultimately, we have got a tree where A is the root node. To the left of A, we have B. To the right, we have the element C. To the left, we have the element D, E, F and G. अब जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, you can return the answer for the same. For example, they are asking for the number of elements in the left subtree. In the left subtree, we have 3 elements. In the right subtree, we have 3 elements. At the last level, we have the elements D, E, F, G. Or they may be asking for the post order. Pre-order and in-order was given to you. Most popular type is आपको कोई दो sequence given होंगे and they'll be asking for the third one. So the post order sequence will be find out the post order. Using the trick, can you tell me that what will be the post order? Basically using trick मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपका आंसर फटाफट से आ जाए. So in the post order, we are always deleting the leftmost leaf node. So here D, E, F, G are the leaf nodes. So I'll be deleting the leftmost leaf node, that is D. Then we'll be getting E, B, F, G, C and A. So using trick, I have written the post order for the tree. So this is how you can construct the tree from pre-order and in order. For practice, we'll discuss one more question, then I'll be constructing the tree from post order and in order, and then we'll be done for the day. Alright, next one, एक और example लेते हैं. Construction of binary tree from pre-order and in order. Pre-order or post order tells you the root node. In order gives you the elements of left subtree and the right subtree. So first of all, A is coming first. That means A will be the root node. To the left of A के लेफ्ट में आपके पास 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं. आई डोंट नो इन चारों में से रूट कौन होगा. सो आई एम सिंपली राइटिंग हियर F, D, B, E. राइट साइड पे we are getting 5 elements G, I, C, H, J. अब इन चारों एलिमेंट्स में से रूट कौन होगा. रूट हमेशा आइडेंटिफाई कर रहा है प्री और पोस्ट ऑर्डर. यहाँ पे प्री ऑर्डर है, सो कंसिडर द प्री ऑर्डर of these 4 elements. It is B, D, F, E. That means these are the elements of left subtree. These are the elements of right subtree. Left subtree elements में से B पहले आ रहे हैं, so B will be the root node. Right subtree elements में C पहले आ रहे हैं, so C will be the root node. So B now out of 4 elements, B is the root element. What are the elements of left subtree? Go to the in order. On the left of B, 2 elements are there, F and D. मोरओवर आप देख सकते हैं जब आप इन ऑर्डर से लिख रहे हो तो आपके पास ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स चेंज नहीं हो रहे, तो आप इस तरीके से थोड़ा सा इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं. एफ डी एंड ऑन द राइट ऑफ बी वी हैव द एलिमेंट ई. आउट ऑफ एफ एंड डी, डी एंड एफ को कंसिडर करना है, यानी कि ये दो एलिमेंट्स है जो लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, इनमें डी पहले आ रहे हैं, सो डी विल बी द रूट नोड. यहाँ पे ऑल्दो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, डी के लेफ्ट में एफ आ रहे हैं, सो इट विल बी ऑन द लेफ्ट सबट्री. Because anyhow you had written these elements from the in order only. हमने in order से लिखे, तो बार बार अगर आप चेक नहीं करना चाहते then also it is fine. Moreover you can cross verify F is on the left side. एक ही एलिमेंट है, कुछ नहीं करना. C के लेफ्ट में दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, so this will be the elements of left subtree and elements of right subtree. Here we'll get H and J. Now, out of G and I, consider these two elements. Out of G and I, G is coming first. So, G will be the root node. I is on the right hand side. Similarly, out of H and J,
H is coming first, so H will be the root node, J is on the right hand side. So we have got a unique binary tree. Quickly return the post order for this tree. A, B, D, F. Here we are getting E, C, G, I, H, and J. Can you tell me that what will be the post order? Anyhow, we have got the binary tree. अगर B के right subtree में elements पूछे, B के right subtree में कितने elements हैं? Only one element is there. What are the number of elements on the right subtree or on the right side of C? That is 2 elements. What are the elements available at the leaf level? That is F. Last level पे we have 3 elements, F, I and J. What are the leaf nodes? It's F, E, I, J. Leftmost leaf node, F. So anything can be asked. दैट मीन्स जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके लिए आपको बाइनरी ट्री को रेफर करना है और बाइनरी ट्री आपको दिया गया नहीं है, सो यू नीड टू कंस्ट्रक्ट द बाइनरी ट्री. लेट्स क्विकली राइट द पोस्ट ऑर्डर. So post order is always delete the leftmost leaf node, so it is F, D, E, B, I, G, J, H, C and E. This is the post order. I hope that this is simple. So the way we are constructing the binary tree from pre-order and in-order, in the same way we'll be constructing the binary tree from post-order and in-order. Now the only difference is, in order to find out the root element will be available at the end of the post-order, because the name itself suggests that root is placed at the last position, right? So basic steps remains the same. First of all, you need to identify the root node and then we'll distinguish between the elements of left subtree and right subtree. Are you all comfortable with the binary tree construction from pre-order and in-order? So in the next master class, I'll be taking some good set of questions on the basis of binary tree construction as well as some more questions from binary tree theorems. All right. So here in the post order, last element is the root element. So if you look at this order, A is coming at the last. So that means A will be the root for the tree. Now refer to the in order to distinguish between the elements of left subtree and right subtree. On the left side, we are getting 5 elements, that is B, F, J, H and D. And on the right of A, again 4 elements are there, that is E, I, K, G and C. Follow the same process. Identify what will be the root element. So we need to refer to the post order. Can you tell me that what will be the root for the left subtree and what will be the root for right subtree? Here J, H, F, D, B, that means first 5 elements are the elements of the left subtree. Next 5 elements K, I, G, E, C, these are the elements of right subtree. Can you tell me that what will be the root for the left subtree and what will be the root for right subtree? In order to identify the root, now in this case we are referring to the post order. So you can see here out of these 5 elements, B is placed at the end. So B will be the root node. Remaining all 4 elements are on the right of B, so it will be a part of the right subtree. So these 4 elements will be a part of right subtree. This is F, J, H, D. For right subtree, exactly, C will be the root node. So out of the 5 elements of right subtree, C is placed at the end. So C will be the root node. To the left of C, we have 4 elements E, I, K, G. Follow the same process.
Now, out of F, J, H, D, what will be the root element? Out of J, H, F, D, D is at the end, so D will be the root node. All these elements are present on the left of D. F, J, and H are present on the left of D, so F, J, and H. Out of these three elements, F is at the end, so next root will be F, J, and H is on the right side. Out of J and H is at the last position, so next root will be H and J is on the left. So left subtree is over. Follow the same process for the right subtree. Now we are left with four elements, K, I, G, E. E is at the end, so E will be the root node. Remaining three elements are on the right side. It is I, K, G. Out of I, K, G, G is at the end, so G will be the next root. Here we'll be getting I and K. Out of I and K, I is at the end, so I will be the root and here we'll be getting K. So ultimately, we have got a unique binary tree. This is A, B, D, nice pattern, right? Zigzag, H, and here we are getting J. And on the right hand side, C is the root node. Then we are getting E. Then we are getting G, I, and K. Now, whatever they are asking, you can answer it. So at the last level, we have two elements, J and K. Leftmost leaf node is J. I want to return the pre-order. For the pre-order, we discuss the short trick. That is, always follow the leftmost path if two paths are available. Otherwise, जो भी single path है आप उसको follow करेंगे, you will get the pre-order. Always start from the root node because pre-order में सबसे पहले root visit होता है. So root is A. Two paths are available. Follow the left one, B. Since it's depth first traversal, so go till the end. So B के बाद we are getting D, F, H, and J. D, F, H, and J. Then C, E, G, I, and K. This is the post order for the given pre-order for the given post order and in order of a binary tree. Is this clear? So we'll be taking one more question, last question, and after that we'll end our discussion because this is the only concept in the binary tree construction. इस तरीके से हम tree construct करते हैं. Questions को पूछने का तरीका अलग हो सकता है, but basic concept remains the same. One more question for your practice. Can you tell me that what will be the elements available at the leaf level? What will be the elements which will be, or how many elements will be available at the lowest level of the binary tree? So to answer that question, first of all, you need to construct the binary tree. Along with this, I want you to return the pre-order for the resultant tree. I want you to traverse the elements of the tree that you are going to construct out of the given post order and in order. First of all, for the whole tree, what will be the root node? Come on, hurry up. For the root, we have to refer to pre-order or post-order. So in the post-order, last element will be the root because we know that in the post-order, root is placed at the last position. Root.
So A is present at the end, so A will be the root node. To the left of A, 6 elements are there: B, H, K, I, D, and G. To the right of A, we have the elements C, L, J, C, L, J, M, F, E. Again, follow the same process. Now, instead of having 6, 12, and 13, instead of having 13 elements, now we are having 6 elements. So, out of these 6 elements, these are the elements of left subtree. Next 6 elements are the elements of right subtree. In the left subtree elements, B is present at the end, so B will be the next root. Here we'll get H. You can see here all these elements are present on the right side, so I'm keeping this on the right of B, I, D, G. Out of these 5 elements, D is at the end. D will be the root. To the right of D, we have one element, that is G. And to the left, we will be having 3 elements. It's H, K, and I. Out of H, K, and I, H is at the end. To the left of H, we have nothing. To the right of H, we have K and I. Out of K and I is at the end, so next root will be I, and K is on the left of I. Simple. Same process you have to follow on the right subtree. So in the right subtree, C is the root node, so C is the root node. To the right, we'll be having L, J, M, F, E. Out of these 5 elements, E is at the end, so next root will be E. To the left of E, we have the 4 elements L, J, M, F. Out of these 4 elements, F is at end, so next root will be F. Here we are having L, J, M. Out of these 3 elements, J is at the end, so J will be the root. To the left of J, we have L, and to the right of J, we have M. So we have got a tree here. So finally, the tree is A is the root. To the left of A, we have the element B. To the right of B, we have the root, that is D. To the right of D, we have the element G. And to the left, we have the element H, I, and K. Similarly, write the elements of the right subtree. C is the root, C, E, F, J. So C is the root. To the left of C, nothing is there. To the right, we have E. To the left of E, we have the element F. To the left of F, element J is there, then is L, and then is M. So at the last level of the tree, we have 3 elements, that is K, L, and M. And I asked you to return the pre-order. So pre-order, using the trick, uh, let's write the pre-order. So we'll be starting from the root node A, then follow the leftmost path. On the left path, we have B. Only one path is there, D. From D, 2 options are available. We'll choose the left one, H, I, and K. Here we are getting G. All the elements of left subtree are over. Go to the right subtree. So here we have C, then comes E, F, J, L, and M. These are the elements of right subtree. Very good evening, Lakshman. So this is all about the binary tree construction from post order and in order. So हमारे पास दो possibilities होती हैं, one from the pre-order and in order, post order and in order. We have observed that pre-order and post order are responsible for returning the root element, and in order is responsible for returning or to distinguish the elements between left subtree and right subtree.
तो इसका मतलब जब आप बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करते हो तो इन ऑर्डर मैंडेटरी है, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में से एक सीक्वेंस गिवन होगा. सो दीज टू सीक्वेंसेस आर मैंडेटरी to get the unique binary tree. Again, I'm repeating one point related to the binary search tree. Sometimes they'll only give you the pre-order or post-order of the binary search tree, and they'll ask some question on the basis of the binary tree. Then many students are like, that in order is not given, how can we find that? So by default, we have proved this point that in order of binary search tree is always the ascending of order of the elements. So that means अगर आपको term दी गई है, हमेशा टर्म को ध्यान से पढ़िए. If it's binary tree, then you cannot consider the in order. If it's binary search tree, then directly you can take the in order as the ascending order. So this is all about this session. In the next session, we will be talking about AVL tree. So one of the drawback we had seen in the binary search tree is the worst case time complexity is linear time complexity, that is order of n. So in order to reduce the time complexity, we are going for the concept of AVL tree. So I'll be covering AVL tree in two portions. In one part, we will be talking about the minimum number of nodes, maximum number of nodes with height edge. We'll talk about the recursive statement. We'll talk about different types of problems that can be there in the AVL tree and the solutions for those problems. Okay, so this will be the agenda for the next session. As you guys know that I'm taking the free sessions on YouTube and on Testbook platform. YouTube and Testbook platform in the form of the masterclass. Testbook platform पे दो तरीके की classes है, masterclass and the super coaching. Super coaching is for the subscribed users. That means those who have got the subscription, and masterclass is free for everyone. Anyone can join it. So in the YouTube, I'm just covering the important concepts of the UGC NET syllabus. Important concepts. And on the basis of this, जो भी concepts हम YouTube पे कर रहे हैं, इसके basis पे जो भी important set of questions है, I'm taking that on the master class. Important set of questions. So this is basically the practice session. तो इससे क्या होता है कि हम लोग speed पे भी focus कर पाते हैं because we have the option of using the poll and so that's why I'm taking the questions on the textbook platform itself, but the concepts on YouTube. Timing is same, that is 6:30 p.m. Alternate days पे classes होती हैं, like Monday and Tuesday evening is off, Saturday Sunday off नहीं रखा है. So YouTube sessions are on Wednesday. Thursday we have the masterclass. Friday we have YouTube session. Then Saturday we have masterclass. Sunday we have YouTube session. That's it. Monday and Tuesday is off. Monday and Tuesday off. If you want to cover the whole syllabus in detail, because on YouTube only the important concepts will be covered. If you want to cover the whole syllabus in detail, then you can refer to the super coaching. Link is given in the description box. Go through the structure of the super coaching batch so that you get an idea that how the things will be carried out throughout your course till your exam. And on the basis of that, you can see if it's beneficial for you. But definitely, I think this is beneficial because in the live sessions, in the super coaching, we have live sessions for both paper 1 and paper 2. सारे units live sessions पे cover हो रहे हैं. अगर by any chance आप live session नहीं attend कर पा रहे हो, then you can follow the recorded session. Apart from that, in the description box, the link of the Telegram group is also given for your reference. So in case if you have any doubt or query, you can post your queries in the Telegram group. Anyone having any doubt? So this is all from my side. And अगर आपको ये सारे videos अच्छे लग रहे हैं, then don't forget to like the video, subscribe the channel, and hit the bell icon for the notifications of new videos. So thank you so much, guys. I'll see you in the next session. Till then, take care. Bye bye.